Good morning kids, how are you all? I hope you all are fine and doing great at your home. I am Khushbu Patel from Saraswati Group of Education and I am taking a computer subject as you know. Now, what we have done in the last session, we have done the language processor as well as the utility software, right? Now, in this session, we are moving ahead. So, as you know, you should have your textbook, right? So, in your textbook, please open page number 5, right? And our today's first topic is application software, right? As you know only that this chapter is all about the software, right? So, we have to study the different type of software. So, first one, today we are going to study that is application software, right? Now, I hope you have opened your textbook. Moving on, an application software is a set of a program designed to help users to perform particular tasks. That means, as per my requirement, right? मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसा वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, तो यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजर को काम आए ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, राइट? जैसे मोबाइल में भी काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं which make our work too much easy, right? See, they are installed on a computer depending upon the user requirement. If you want to do any kind of a gaming application in your computer, right? So that means ये तुम्हारी demand है. So according to your demand, the software is been installed in your computer. So what is that? It is application software. જે પહેલેથી કમ્પ્યુટરમાં હોતા નથી પણ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ અને આપણા કામ પ્રમાણે આપણને એમાં ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ છીએ. So that is what? Yes, application software, right? Moving further, the application software can be further divided into two categories, right? Application means for different purpose. We have different applications. But that application software can be divided into two categories, right? First one is general purpose application software, right? That means which can be utilized by all the users, right? Normally for writing, for drawing, for making sheet, right? These are kind of a thing which is generally many people are doing. So that type of a software is known as general application software. Then the next category is specific purpose application software, right? कुछ स्पेशल चीज के लिए ही वो सॉफ्टवेयर बना है या फिर वो एप्लीकेशन बनी है, right? तो उसको बोलते हैं specific purpose application software, right? Okay, so now we have to study it in a detail. The first category is general purpose application software, right? See, general purpose application software is developed keeping in mind the general needs and requirements of a large number of people. That means most of the people who know how to operate a computer, जिनको थोड़ा बहुत आता है और उन सब का एक जैसी नीड होती है, एक जैसा ही काम होता है नॉर्मली. सो उसके लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड एज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? यू कैन से जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और यू कैन से जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? सबकी एक जैसे डिमांड है या सबका एक जैसा एक तरीके का काम है. So that can be done using a simple common application, जिसको हम general applications भी बोल सकते हैं, right? See, examples of such software are, which is the first one, word processing software, right? This type of software is used for creating text-based documents. मतलब मुझे कुछ लिखना है, कुछ लेटर बनाना है, कुछ पेपर्स बनाना है, कुछ रिपोर्ट्स बनाना है. That means I just want to type simply.
फिर उसको फॉर्मेट करना है, किसी चीज़ को बोल्ड दिखाना है, किसी चीज़ को इटैलिक में दिखाना है, या किसी चीज़ का कलर चेंज करना है, फॉन्ट का मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है. So it can be done using this simple application software, right? See, creating text-based documents such as letters, stories and reports, right? All types of word processing software provide options for creating, editing, formatting and printing documents. Means કાંઈ પણ લખાણ આપણે કરવું છે તો that can be done using word processing software in which we can edit our text. ભૂલથી કંઈક લખાઈ ગયું છે તો એને કટ કરી અને ડિલીટ કરી અને ત્યાં હું બીજું લખી શકું છું, right? Suppose I want to change the title's color, so I can format it, right? So that can be done. These all are the simple needs. ये सबकी एक जैसी कॉमन तरह की डिमांड होती है जब वो कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करने के लिए बैठते हैं, right? So this type of a thing can be done using word processing software. The examples are, see, Word Perfect, Open Office Writer are few examples of word processing software. As you can see, only 3 examples are given of text-based document or you can say text-based software, जिसके ऊपर हम काफ़ी सारी चीज़ें लिख के, फॉर्मेट करके, एडिट करके अपना काम कर सकते हैं. So that is general application software. Now, moving further, what is that? Spreadsheet software. Have you ever seen a spreadsheet, right? Row and columns होती है. Row means आड़ी line, columns means ऊबी line, right? The combination of this two will be considered as a spreadsheet. जैसे हमें कोई documents की reports बनानी है, जैसे student का information बनाना है, जैसे मैंने लिखा कि student का नाम, उसके parents का नाम, उसकी birth date, birth place, right? Education, okay, last school attended, everything. If I want to make this type of a report, so I can make it using spreadsheet. So that is also general or you can say common software, right? See, this type of a software accept data values in row and columns, right? It allows us to perform calculations on data and plot charts. अच्छा, कैलकुलेशन मीन्स सपोज मैं किसी का रिजल्ट बना रही हूँ उसमें, सो जो सब्जेक्ट के जितने भी मार्क्स है उसका टोटल आई डोंट हैव टू डू इट मैन्युअली. मैं उसमें एक फंक्शन डाल दूंगी, उसकी एक फॉर्मूला डाल दूंगी तो वो अपने आप हो जाएगा. कंप्यूटर विल शो मी द रिजल्ट ऑटोमेटिकली, राइट? आई डोंट हैव टू डू इट मैन्युअली, राइट? सो इट इज नॉट ओनली अलाउइंग अस टू पुट द डेटा इनसाइड, but it is also allowing us to have the result. कोई भी तरह का calculation we can perform, right? See, Excel, OpenOffice Calc, जिसको calculator भी बोलते हैं, and Lotus 1, 2, 3 are a few examples of spreadsheet software. If you remember, kids, spreadsheet software we have also seen in hardware. Right? I told you that this is row, this is column, and combination of these two will make the spreadsheet, in which you can put the data, you can input the data, and you can do a calculation as well. Right? So this was the second general purpose application. Right? So I hope you have understood till here. Right? Now moving further, turn the page. Open page number 6. The third general purpose software. It is written in a capital letter DBMS, and capital letter means it is a short form of something. तो इसका full form क्या है? DBMS का full form क्या है? See, it is written in a bracket. So this you have to underline, right? See, database management system. Right?
सो DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? एंड हाउ इट वर्क्स, सी दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प अस स्टोर large amount of data in an organized manner. Let me give you one example. एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम जूनियर केजी या नर्सरी से 12th स्टैंडर्ड तक, यू विल सी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट। उन सबकी पर्सनल डिटेल, राइट, या पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनका नाम, उनके फादर का नाम, मदर का नाम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस, birth year, everything, right? So I want to store it properly. So where can I store that? In one software. What is the name of that software? DBMS. That is, ये पूरे का पूरा जो डेटा है मेरे पास, सारे स्टूडेंट का जो डेटा है, उसको मैंने प्रॉपरली अरेंज करके रखे है। So whenever I want to fetch the information of one student, I can take it out very easily. एकदम સરખી રીતના ગોઠવીને રાખેલું છે. So I can have the information of any student in a very less time. Right? See, this type of software help us store large amount of data in an organized manner. A DBMS can store details about students, books, customers, products, etc. That means right now I have given you the example of students, मतलब school. But this type of a software can be used by shopkeeper to maintain the record of products. Right? जैसे आप मेडिकल स्टोर में जाते हो, किसी फार्मेसी में जाते हो, तो आप देखोगे कि that if you will give a prescription, so they will first type on a computer. फिर उनको पता चलेगा कि this one is your, तो वो वहीं से जाके लेके आएंगे. So in short, they are managing the record of all the medicines available in the store, right? So DBMS is a software which can help many people to store large amount of information or large amount of data, right? See, Access, Oracle and OpenOffice Base are a few examples of DBMS software, right? Few examples are given here, okay? So that we can say that this is DBMS software which is used by everyone. Most of the people are using this type of a software. So again, it is general purpose application software, right? Clear till here? Moving further, graphic software. What do you mean by graphic? That word we have seen in the hard word. Again, graphic means characters. जैसे आप कोई कार्टून कैरेक्टर्स देखते हो टीवी के स्क्रीन पे, राइट? तो you can see that cartoon character is moving, right? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिक, राइट? जैसे कोई बड़ी सी अच्छी वाली मूवी में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, ऐसे कार उड़ रही है ना, ऐसे इंसान उड़ रहा है ना, सो व्हाट इज दैट? इट इज एन इफेक्ट, राइट? सी, दिस टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर हेल्प अस क्रिएट एंड मॉडिफाई इमेजेस. मॉडिफाई मीन्स चेंजेस करना. जैसे मोबाइल में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसकी मदद से हम अपने फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, राइट? सी, Adobe Photoshop and CorelDRAW are a few examples of graphic software. जैसे मैंने कोई एक फ़ोटो आपकी रखी है और उसके पीछे का बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, राइट? तो दैट आई कैन चेंज यूजिंग सर्टेन सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर, राइट? फोटोशॉप है या CorelDRAW है. These are the two basic software which is utilized by many photo person, जो फोटो खींचते हैं स्पेशली, राइट? स्टूडियो में आप जाते हो या बाहर कहीं पे स्पेशल वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो होते हैं, they are using this kind of a software. Okay, so that was graphic software. Moving further, next one is
एनिमेशन सॉफ्टवेयर. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको दिखाया था हार्डवर्ड में कि एनिमेशन का मीनिंग क्या होता है. राइट, सी दिस टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरएक्टिव एप्लीकेशन. राइट, वीडियो गेम्स, एनिमेशन एक्सेट्रा. Adobe Animate and Blender are a few examples of animation software. जैसे कोई एनिमेटेड मूवी होती है, जैसे कार्टून की कोई मूवी होती है, राइट, फ्रोजन या फिर कार्स ऐसा है ना मूवीज, राइट. सो दैट इज व्हाट, कि कार्टून का एक कैरेक्टर ऐसे मूव कर रहा है, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे बना सकते हैं वैसे, बाय यूजिंग एनिमेशन सॉफ्टवेयर. राइट, सो that is what it is, also for general purpose application. Right, see, Adobe Animate and Blender are the examples of animation software. These are only two examples given here. Okay, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं through which you can create a very interesting animation. Right, okay, I hope you are understood till here. Moving further, presentation software. Now just recall your memory and remember the first session जिसमें हमने हार्ड वर्ड्स देखे थे. राइट, उसमें कुछ स्लाइड्स ऐसे जा रही थी और मेरी आवाज़ पीछे आ रही थी. राइट, एक वर्ड देखा, फिर उसका मीनिंग देखा, फिर उसके पिक्चर्स देखे. राइट, फिर हमने दूसरे वर्ड पे गए. तो वो कैसे बनाया था मैंने? इट इज़ because of a one simple application software that was PowerPoint. Right, जिसकी मदद से मैंने presentation बनाया था. So I can give my idea about the new words to you. So I have made that presentation using a software. Okay, so that is what presentation software. Right, see, this type of software is used to create and design slideshows and multimedia presentation. You have the examples, as in most of the subject you are seeing that presentation of hard words, right, so that we can prepare. PowerPoint and OpenOffice Impress are a few examples of presentation software. Right, you can make any type of a presentation. जैसे आप कभी टीवी में देखते हो या कहीं आपने कभी सुना हो कि ऑफिस में आज मेरा प्रेजेंटेशन है. सो दैट मीन्स आई एम गिविंग माई आइडिया टू ऑल इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन. राइट, सो दैट कैन बी मेड यूजिंग पावरपॉइंट एंड मेनी अदर सॉफ्टवेयर. राइट, सो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे हैं, कॉमन है, लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस तरह के सॉफ्टवेयर की होती है. So these software are considered as general purpose, yes, application software. Right, see the last one, web browser. Now you all know how to search something using Google. आपको कुछ भी search करना है about anything. If you want to search out the information, you can do it with the help of Google. इंटरनेट चालू किया, गूगल में आपने टाइप किया, राइट, तो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली फॉर वन बट मैनी, अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो व्हाट इज दैट, जिसमें आप कुछ सर्च करते हो ना, उसको सर्च इंजन बोलते हैं या फिर बोलते हैं वेब ब्राउजर. राइट, सी, अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस व्यू द वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. Underline this, World Wide Web, www. If you remember, और कभी आपने ये यूज किया हो तो पता चलेगा that whenever you are opening any site, the first three letters are www. तो ये उसका full form है, World Wide Web. Right? So then you will write the address of that website. तो फिर आपको वो वेबसाइट के पेजेस दिखेंगे. राइट, तो वेबसाइट जो होती है वो पूरी होती है, बट एक एक पेजेस को हम बोलते हैं वेब पेजेस. राइट, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम and Opera are a few examples of web browser. Right, so these are the different
search engine through which you can search many things, right? Okay, so that was about the general purpose application software. We have seen many software: animation, graphic, spreadsheet, DBMS, word processing, right? And presentation, web browser. So these all are the software which is commonly used by many people. So again I am repeating, it is considered as general purpose application software. I hope you have understood till here, right? So today I am ending my session over here. We will meet next time. But as you know what you have to do, as in when you get the time, you just have to read this topic again from your textbook. And for any query, go through this video again. We will meet next time. Till that time, please stay at home, stay safe. Bye bye.